हेलो फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूजिंग टी टेस्ट. सो फॉर दिस आई एम हैविंग ए डेटा ऑफ हाइट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स. इंचेस में डेटा है. ये बॉयज का डेटा है 72, 68 एंड सो ऑन, एंड फॉर गर्ल्स इट इज 65, 68 एंड सो ऑन. नाउ हियर माय हाइपोथेसिस स्टेटमेंट इज वेदर द बॉयज आर टॉलर देन गर्ल्स. ये हमें चेक करना है, लेकिन ये चेक करना है हाइपोथेसिस टेस्ट यूजिंग टी टेस्ट के साथ. तो इसे हमें करने के लिए हम जाते हैं डेटा टैब में, और डेटा टैब में जाने के बाद में डेटा एनालिसिस, और डेटा एनालिसिस में यहाँ एक पेयर्ड टी टेस्ट का ऑप्शन आता है, लेकिन ये पेयर्ड में नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ बॉयज़ और गर्ल्स डिफरेंट इंडिविजुअल्स का डेटा है. तो इसको मैं पेयर्ड में नहीं जाऊँगा, इस ऑप्शन में जा रहा हूँ. इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया हूँ. फिर यहाँ पर मुझे अभी इनपुट रेंज ऑफ वेरिएबल 1 एंड फॉर वेरिएबल 2 ये दोनों देना है. तो फॉर वेरिएबल 1 आई एम सिलेक्टिंग दिस, फॉर वेरिएबल 2 आई एम सिलेक्टिंग दिस, then labels of course those are included. Now alpha value is basically 0.05, which is basically the value which I have decided or I can decide, and this means that I am going for 95% of confidence level. So I want that the output range, Excel should write it here for me. So I will click OK. So I am getting the results like this. Now the results are, I am getting some descriptive statistics, that is mean. I will just make little bold these values. So I am getting the mean value. Basically we are comparing in t-test the mean only, means of the data sets. So variance is there, observations are there. Now here the probability of occurrence of that event, if I say which we had said that they are 95% or 5%. So if I multiply this value with 100, so I get this value as 4.8. Now this value is a less significant or very close to that, so we can say that it is not necessarily that the boys are having height more than the girls. So this is the interpretation, but this is on one tail, because this question was whether the boys are having height more than girls. But had there been a question on both the ends of the normal distribution, that is with two tails, then we compare this. I will just multiply this with 100 again, and I am getting the value as 9.7 here. Okay. Now here I am getting the value for two-tailed test, that is 9.79. So is there any significant difference between the height of the boys and girls? Then it shows कि yes, it is having a little significant difference, but this value is still not that more. But here it is very close to that. So that is how we interpret about our hypothesis using the t-test. Thank you so much.